हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पोइट्री रिवाइज कराऊंगी इन जस्ट 10 मिनट्स, तो आई एम हियर विद दैट वीडियो और आई एम श्योर आप भी तैयार हैं। तो ब्रिंग योर पेन एंड पेपर विद यू एंड वॉच टिल द एंड because you are going to get not only the theme, not only the keywords, not only the tone of the poem, but also the important poetic devices. तो पोएट्री के जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इन चीज़ों को ध्यान में रखें एंड बिलीव मी, पोएट्री आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद सेक्शन हो सकता है क्योंकि देर आर ओनली 5 पोएम्स। उनमें से भी आप कोई एक पोएम छोड़ सकते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन में ऑफ कोर्स देयर इज अ चॉइस, बट आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी पोएट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पोएट्री का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने 4 पोएम भी अच्छे से कर ली तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चंस जो कि मोर देन 10 मार्क्स के हैं आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। So stay with me and let's begin with the first poem, My Mother at 66. So My Mother at 66 is all about the fear of separation from one's parents and an awareness of the growing old age of your mother. पोएम की टोन की बात करें तो पोएम की टोन मेलंकलिक है, सैड है, रिफ्लेक्टिव है, टेंडर है एंड फाइनली द कीवर्ड्स, नाउ कीवर्ड्स एजिंग. It's all about separation anxiety, it's also about the mother-daughter bond, and it is also about emotional vulnerability. Now, talking about the symbols in this poem, the pale face is compared to late winter's moon, and that late winter's moon is a symbol of aging and fragility. Now, talking about poetic devices in the poem, सबसे पहले simile, मदर्स फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. आपने देखा कि भाई कैसे मदर के फेस को कॉप्स के साथ कंपेयर किया गया है. सिमिली की एक ही पहचान होती है कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है और कंपैरिजन वर्ड्स लाइक एज का यूज किया जाता है. So mother's face ashen like that of a corpse. और इस पोएम में इमेजरी है, the visual imagery of mother sleeping in the car. There is repetition, smile and smile, जो कि पोएट की हिडन एंजाइटी को स्ट्रेस करती है. और इस पोएम में कंट्रास्ट है, यंग ट्रीज, यंग चिल्ड्रन कंपेयर टू द ओल्ड मदर. जब भी आप किसी भी पोएटिक डिवाइस की बात करें, ऑलवेज कनेक्टेड टू द theme. So that is all about My Mother at 66. Now moving on to the next poem, Keeping Quiet by Pablo Neruda. Now this poem is all about silence, introspection and global peace. टोन की बात करें तो टोन रिफ्लेक्टिव है एंड मेडिटेटिव है. Finally, the keywords for this poem are introspection, stillness, human unity and emotional awareness. Now symbolism, इसमें symbol बहुत हैं. Stillness symbolizes self-reflection and peace. Poetic devices की बात करें तो anaphora. Now what is anaphora is जब कोई एक ही word और phrase at the beginning of sentence बार बार repeat किया जाता है. तो how the poet says, let's not speak in any language, let's stop. So how let's begins. So that's anaphora. Alliteration है, sudden strangeness. Imagery है, images of fishermen gathering salt and the earth. Now that salt is also a symbol of money or wealth, क्योंकि हम सब लोग ही जिंदगी में कुछ ना कुछ सॉल्ट बटोरने के काम में लगे हुए हैं. That is salt. Symbolism की बात करूँ तो earth becomes a symbol of teaching us resilience and life and about regrowth and rebirth. And finally, the poem is all about pausing our life, thinking, introspecting, meditating, and then trying to understand ourselves better. And now let's talk about A Thing of Beauty by John Keats. A Thing of Beauty, as the name itself suggests, is all about how beautiful things actually help us do better in life. The theme of this poem is beauty in nature, gives us eternal joy. The tone of the poem is optimistic and celebratory. Keywords are nature, beauty, imagination, and hope. And the symbolism in the poem is that nature represents healing and spiritual upliftment. Now, if we talk about the poetic devices in the poem, the first line itself, A Thing of Beauty is joy forever, is a metaphor that actually compares thing of beauty to joy. Imagery की बात करूँ तो there are lots of images in the descriptions of nature.
There is alliteration. Now what is alliteration? जब initial sound कोई repeat होती है, then that is called alliteration. तो there are words like cooling covered जिसमें क sound repeat हुई है. तो poet alliteration का use करके किन्हीं की phrases की तरफ आपका ध्यान attract करता है. We also have enjambment in the poem. Now what is enjambment? जब when lines flow into each other without any pause or comma or break. So enjambment भी poetic device है जो काफी इस poem में use की गई है. Now talking about the roadside stand by Robert Frost, आप देखेंगे कि Robert Frost की जो आपने आपके बाकी syllabus की poems हैं उनसे काफी different है, because this poem is all about the economic struggles of rural people, कि कैसे वो लोग थोड़े से पैसे के लिए कुछ कमाने के लिए एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं और कैसे सिटी पीपल उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, हाउ द गवर्नमेंट इज अपेथेटिक टू देयर प्लाइट, और कहा जाता है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम उनके लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता. सिंबॉलिज्म की बात करूं तो द रोड साइड स्टैंड इज अ सिंबल ऑफ द रूरल पीपल्स डिजायर टू शेयर इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस. They have made this stand so that they can also earn a small livelihood. अगर हाईवे को एज अ सिंबल हम लें तो देन द हाईवे इज अ सिंबल ऑफ द प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस जो कि रूरल एरियाज के साथ से निकली जा रही है, लेकिन it is not reaching the rural areas. So the highway is a symbol of the progress that is passing the rural people by. अगर poetic devices की बात करूं, then there is alliteration, there is imagery, there is contrast, there is also something like greedy good doers, which is an oxymoron. It is also an alliteration, greedy good doer. The g sound is repeated. So आपको काफी सारी इसमें पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलेंगी. एंड नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच. नाउ दिस पोएम इज ऑल अबाउट हाउ पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन is used to oppress women. So Aunt Jennifer is a woman who is not happy in her marriage, all because of the patriarchy. And the tone of the poem is critical, it is symbolic, and it is also slightly tragic. The keywords की अगर बात करें तो patriarchy, female oppression, freedom and resistance. Symbols, there are two main symbols in the poem. One is tiger and the other is Aunt Jennifer. Now tigers are a symbol of courage and freedom, while Aunt Jennifer is wearing a wedding ring, and that wedding ring is a symbol of the burden of marriage that she is carrying. She is unhappy in the beginning, and towards the end of the poem it says that when Aunt Jennifer is dead, so her plight does not end with her death, means that Aunt Jennifer may die, but there would be other women who would still have to suffer in bad marriages. Poetic devices की बात करें तो there is alliteration, prancing proud, P, P, दोनों sound repeat हो रही हैं. Then there is contrast, how the weak Aunt Jennifer actually creates something so strong and powerful like the tigers who are courageous as well as fearless. In fact, the whole poem contrasts imagined freedom and oppression. तो आपके पास दो major opposing symbols हैं इस poem में. When you write poetry answers, it's important that you remember and use the poetic devices to connect to the theme. For example, you can say that the poet uses the simile, mother's face, wan and pale like late winter's moon, and then say that the poet is using this simile to emphasize the poet's fear of losing her mother. This makes this answer so much analytical, and this is something that the examiners reward. So always when you are writing the answers, remember the poetic device and connect it to the theme. So if you remember the theme, the symbolism, the tone and the poetic devices in a poem, what will happen? You will be able to answer any question in your board exams. So I hope that you like the video. Don't forget to share, comment, subscribe. If you want me to share this list of keywords and the poetic devices with you, comment poetic devices and I'll share the video with you. I hope the video finds you at the right time. My best wishes for your exams. See you in the next video.